नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जिसमें कि हम रिव्यू करने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच जो कि इंडिया जीत गया है 44 रन से। सबसे पहले बात करते हैं स्कोर कार्ड की। तो स्कोर कार्ड पे अगर नज़र मारी जाए तो न्यूजीलैंड और इंडिया का दोनों का स्कोर कार्ड जो है कुछ कुछ सेम जैसा ही है। इंडिया ने पहले बैटिंग करनी पड़ी इंडिया को। पहले न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का निर्णय जो है वो इंडिया को दिया, जिसमें कि अगर देखा जाए तो हमारा जो स्क्वाड था वो रोहित शर्मा एज कैप्टन, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शमी और कुलदीप यादव। ये 9 बल्लेबाज थे जो कि बैटिंग करने के लिए आए और जिन्होंने जो पूरे 50 ओवर तक मैच बैटिंग करी। बात करते हैं रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा ने दोबारा से एक विस्फोटक शुरुआत देने की कोशिश करी थी। 17 बॉलों पे 15 रन मारे, एक चौका एक छक्का, बहुत ही शानदार छक्का मारा था। स्ट्राइक रेट 88.24 के हिसाब से खेल रहे थे। अगर शुभमन गिल की बात करें तो इस मैच पे थोड़े अनलकी रहे शुभमन गिल, जो कि सिर्फ 2 रन ही बना पाए। अभी तक इनके स्टार क्रिकेटर हैं, स्टार बल्लेबाज रहे हैं। दूसरी तरफ कोहली की बात करें, जहां पर उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत ही शानदार सेंचुरी जड़ी थी, इस बार कुछ कारनामा नहीं कर पाए। 14 बॉलों पे सिर्फ 11 रन मार पाए, जिसमें उन्होंने 2 चौके ज़रूर शामिल थे। बट वहाँ पर ही तारीफ करनी पड़ेगी ग्लिन फिलिप्स की, जिन्होंने बहुत ही शानदार कैच किया। नाना करते करते उस पॉइंट पे एक बार जॉन्टी रोड्स की याद आ गई थी कि जॉन्टी रोड्स भी इसी तरीके की जो है फील्डिंग किया करते थे उसी एरिया में। श्रेयस अय्यर ने पारी को संभाला। श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल की अगर बात करें तो इन दोनों ने बहुत अच्छी साझेदारी निभाई। 98 रन्स की पार्टनरशिप इन दोनों के बीच में रही, जिसमें कि श्रेयस अय्यर ने 79 और अक्षर पटेल ने 42 रन्स मारे। अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो इस पार्टनरशिप के बीच में 51 रन्स जो है वो श्रेयस अय्यर के आए थे और 42 रन्स जो है वो अक्षर पटेल के आए थे। 136 बॉलों पे 98 रन की पार्टनरशिप, बहुत ही शानदार पार्टनरशिप करी थी। इसके बाद श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए आया राहुल ने 17 रन मारे, जिसमें कि उसमें भी बहुत ही अच्छी शानदार इनकी जो साझेदारी रही। 42 बॉलों पे 42 बॉल्स पे 44 रन, 44 रन की पार्टनरशिप रही, जिसमें के एल राहुल ने 17 रन और श्रेयस अय्यर ने 27 रन की अपनी साझेदारी दी। उसके बाद बैटिंग करने के लिए आए हार्दिक पांड्या ने हालांकि 100 के स्ट्राइक रेट से बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करी, बट तब तक श्रेयस अय्यर उनका साथ छोड़ चुके थे और उन्होंने राहुल के साथ सिर्फ 10 रन की ही पार्टनरशिप करी, क्योंकि उसके बाद राहुल जो है वो आउट हो गए थे। राहुल ने मारे थे इन टोटल अगर देखा जाए तो के एल राहुल ने 23 रन मारे थे, हार्दिक पांड्या ने 45, रविंद्र जडेजा ने 20 बॉलों पे 16 रन। बहुत ही शानदार कैच लिया था विलियमसन ने रविंद्र जडेजा का भी। और उसके बाद शमी आए थे। शमी ने लास्ट बॉल पे मारने की बहुत अच्छी कोशिश करी थी, बल्ला बहुत अच्छी तरीके से घुमाया था, बट अनफॉर्चुनेटली ग्लेन फिलिप्स को कैच थमा बैठे। बॉलिंग की बात करें तो मैट हेनरी का शायद ये मेडन 5 विकेट होल था। बहुत ही शानदार उन्होंने बॉलिंग करी। 8 ओवरों में 42 रन देके 5.20 की इकोनॉमी से उन्होंने बहुत ही शानदार बॉलिंग करी। उनके स्टार बॉलर जो रहे वो मैट हेनरी रहे। अगर बात कर लें न्यूजीलैंड के स्कोर कार्ड की तो अगेन यहाँ पर देखने वाली बात ये थी कि रविंद्र इस बारी रविंद्र कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए। यंग ने एक अच्छी शुरुआत दी थी। 35 बॉलों में 22 रन उन्होंने खेलना शुरू किया ही था कि तभी वरुण चक्रवर्ती की बॉल के झांसे में वो आ गए और अपना विकेट गंवा बैठे। अक्षर पटेल ने रचिन रविंद्रा का बहुत शानदार कैच पकड़ा था, जो कि हम अब आगे अभी हाईलाइट्स पे देखेंगे। दोबारा से केन विलियमसन ने पारी को संभाला। एक कैप्टन पारी खेल के गए और उनकी सबसे अच्छी देखने वाली बात यह थी कि अक्षर पटेल का आखिरी ओवर चल रहा था। अक्षर पटेल के आखिरी ओवर की आखिरी बॉल पे उन्होंने केन विलियमसन का विकेट लिया था और केन विलियमसन काफ़ी आगे बढ़ गए थे। हालांकि केन विलियमसन जो है वो हर किसी के प्रिय बल्लेबाज हैं, तो केन विलियमसन ने पीछे मुड़ के अपने आप को बचाने की भी कोशिश नहीं करी और अपना विकेट थमा बैठे। और अक्षर पटेल ने स्टंप आउट किया के एल राहुल की मदद से। उसके बाद डेरल मिचेल जो कि घातक दिख सकते थे, बट 17 रन पे उनको भी कुलदीप यादव ने रोका। टॉम लेथम ने अच्छी बल्लेबाजी का शुरू करी थी। सिंगल्स पे ही रहे वो ज़्यादातर। अपनी पारी को वो पहले संभालते हैं, उसके बाद अपना अपना रूप दिखाते हैं। दोबारा से ग्लेन फिलिप्स ने भी 8 बॉलों पे 12 रन मारे, एक छक्का जिसमें शामिल था। ब्रेसवेल को ज़्यादा नहीं कर पाए। सैटनर ने एंड में आके एक टाइम ऐसा आ गया था कि लग रहा था कि मिचेल सैटनर जो है वो गेम लेके जा रहे थे,
बट वहीं पर दोबारा से एंट्री होती है हमारे वरुण चक्रवर्ती जी की, जिन्होंने उनको 28 रन पे रोका। 2 छक्के बहुत ही शानदार मारे थे सैटनर ने। मैट हैनरी कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए, 4 बॉलों पे 2 रन। काइल जेमसन ने भी 4 बॉलों पे 9 रन मारे, और विलियम रोर्की ने भी 2 बॉलों पे 1 रन मारे। हाँ, यहाँ पर बात देखने वाली ये है कि इंडिया अपने उसी रूप में वापस आ रहा है जहाँ पर वो 10 विकेटें अपने ओपोजिट टीम की गिरा देते थे, सबको बैटिंग का मौका देते थे, जो कि माना जाता था कि सबको बैटिंग का मौका देते हैं। हमारे तरफ से स्टार बॉलर जो रहे वो रहे हमारे वरुण चक्रवर्ती जी, जिन्होंने 10 ओवरों में 42 रन देके 4.20 की इकोनॉमी से 5 विकेटें ली। बहुत ही शानदार। और अगर इनकी तरफ से देखा जाए तो सबसे अच्छी साझेदारी जो रही वो मिचेल और विलियमसन की रही, 82 बॉलों पे 44 रन की। चलिए अब ज़रा टाइम ज़ाया ना करते हुए देखते हैं हाइलाइट्स, और उसके बाद बाकी की बात करेंगे कि किस तरीके से विकेट्स वगैरह गिरी एंड किस तरीके से क्या हुआ। तो शुरू करते हैं अपनी हाइलाइट्स। Inside edge to get things underway, and Rachin Ravindra does well. Couple of runs to start. Pulls that one away. Gets the length he's looking for. Rohit Sharma finishes the first over with a boundary, 6 without loss. Down the wicket and punishes it for 6 all the way over a wideish long on. Great aggression from Rohit Sharma. And this is where he's difficult to bowl to for Matt Henry, because you don't want to be predictable to him. He's one of those batters that you can't just run up and hit the top of off, because he stood back and he pulled. Oh, really tight. I think that's out, and it is given. Looked like it was nipping a touch, but still should have hit a reasonable chunk of leg stump. They'll discuss it. And that's what we talk about with Matt Henry, that ball that nips back in. They'll go. Ask for a referral. We have a play review for LBW. On-field decision out. I've checked the bowler's feet. Fair delivery. I'm looking at the split screen. Just roll it for me, please. The ball's close to the bat. Can I go to Ultra Edge, confirm bat or no bat? Just keep rolling it through for me, please. Keep going through. Keep rolling it through for me, please. There's a flat line, a gap between bat and ball. No bat involved. Ball tracking ready, please. More tracking coming up. Original decision is out. Pitching out sort of impacting line. Wickets hitting. Michael, you can stay with the original out decision. Stand by. The on-screen signal now. Well, by Michael Goff, rarely gets one wrong. And again, as usual, he was perfectly on the money there. Matt Henry, just heard Ian Bishop speak about how he's... यहाँ देखने वाली एक बात और देखी जा सकती है कि अल्ट्रा एज का बहुत अच्छा प्रयोग किया गया था अपने साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के मैच में, जहाँ पर जब साउथ अफ्रीका बल्लेबाजी करने के लिए आई थी तो इंग्लैंड के एक बॉलर ने अपील की थी कि मेरे पैर से लग के बॉल विकेटों पे लगी है, और जब थर्ड अंपायर के पास बॉल गई थी डिसीजन किया था डीआरएस का, तो थर्ड अंपायर के पास जब डिसीजन किया तो उन्होंने देखा और उन्होंने वहाँ पर अल्ट्रा एज का यूज़ किया था। तो अल्ट्रा एज ना सिर्फ एज को देखने के लिए बल्कि और चीज़ों को भी देखने के लिए कामयाब इस चैंपियन ट्रॉफी में यूज़ करते हुए नजर आया गया है, और ये बहुत ही शानदार। Not yet picked up a wicket in the power play, and here's his first for the tournament. Shubman Gill having a rare failure. Goes for 2, India 15 for 1. Over the top. Bit of aggression early on from Kohli to get off the mark. Good. Straight to the man at mid-wicket, missed time pull shot, I think it's Young. And both openers now gone, a wicket apiece for the New Zealand Seamers.
He's been there and thereabouts. This one not there for the pull, and Rohit Sharma completely mistiming it. We all know he loves the pull. The ball probably didn't come as quick onto him as he would have liked. Oh, aerial, but just gets it over the head of backward point, and it will make it to the boundary. Oh, not this time! Not this time! You said the world's best. That is why. Glenn Phillips again was a bit. इसी कैच की मैंने बात की थी पहले भी कि ग्लेन फिलिप्स ने बहुत ही शानदार कैच पकड़ा था. Better than a one in game one or not, I don't know. Oh, he's hit that hard. The crowd are stunned. Wow. The expressions, they just tell the story. You put as many words as you want, but the expressions just tell you the story. The batter, the people in the stands, what did we just see here? Look at that. That wasn't meant to be caught. कोहली के एक्सप्रेशंस बता रहे हैं कि उनको भी यकीन नहीं हुआ यहाँ पे कि कितना शानदार कैच फिलिप्स ने वहाँ पर इनका पकड़ लिया था. It's an amazing catch, isn't it? Absolutely incredible. अनुष्का शर्मा के एक्सप्रेशन सब कुछ बता रहे हैं कि उनको बहुत उम्मीदें थी कि इस मैच पे कुछ ना कुछ कोहली ज़रूर कर पाएंगे, जैसे उन्होंने लास्ट मैच पाकिस्तान के खिलाफ बहुत शानदार खेला था. That catch. One down the ground. That's well controlled. That's a good shot. A welcome boundary. It's come after a while. After 51 balls. No wonder the crowd is cheering. It's chipped in the air, but he's got enough bat on it. He starts off the over nicely with the boundary. Oh, that's a good shot. This is where he can be dangerous. He spent enough time at the crease. He can just up the ante. He can counter-attack. He's bided his time. Up in the air again. Another boundary. And suddenly a flurry of runs for India. That's nicely played. Really good shot, this. Gave himself room. Just beats the man inside the circle, and therefore has enough on it to get to the boundary. So it's come off the over. After 25, it's 104 for 3. And he's put that beautifully into the gap. He's so good on the back foot. Akshat Patel, when he plays that shot. He's a tall man as well. So what he does is he makes very good views. Trinidad. 50 for Shreyas Iyer. It's been invaluable for India this innings. 6th time in 8 innings he's gone past a half century. 22 times to go. 6 times in 8 innings he convert his score to 50. बहुत अच्छा अभी तक इनका बैटिंग का आंकड़े रहे हैं. 500s. More than anything else, has provided substance to this innings. This is a very good innings. He's holding 130. Should be all right. Inside out, there's never a fielder there. It's a brilliant shot, and it's gone the distance. And he goes down the pitch from the time he makes room, and goes to the leg side, and then therefore giving himself a little more space to be able to swing his arms freely. Wonderful. Oh, top edge! Taken! अक्षर पटेल का यहाँ पर आउट होना मुझे भी एक तरीके से एज अ क्रिकेट लवर बहुत बुरा लगा था, क्योंकि मुझे था कि वो अपने स्कोर को 50 तक ले जाते, और अगर ये 50 पे आ जाते जिस तरीके से ये पहले खेल रहे थे, 50 अगर इनकी कंप्लीट हो जाती तो हो सकता है कि ये और ज़्यादा आक्रामक रूप अपना सकते थे. बट यहाँ पर रविंद्र ने बहुत अच्छा विकेट इनका लिया था.
Just briefly, he must have thought it's going over him, but Williamson kept his cool, his eyes on the ball. It's a tricky catch that he's completed. Just looking to put it down. Look at that. Not even a follow through of the bat. It's just looking to tap it, use the pace of the bowler. The bowler has been bowling at about 94 kilometers per hour. That's a tremendous catch. Pressure on the new bat. Causes a little bit of risk, but it's one that's well taken from Rahul. Great use of the feet. Very good shot, this. Brilliant shot. It really was. The key was the footwork. Rachin Ravindra would have seen him give himself room so early. He telegraphed it. The stumps, they use if you want him. He just dropped it short. And for bowlers that don't get a lot at the bowling crease, they can get foxed easily. He got foxed. That's a good shot. A genuine half volley. Gets the treatment. And that was made to look so easy. A big over for India. They could have lost a wicket. They didn't. Maybe it's turned for them. 164 for 4. Slower ball, but even so, look, saying about earlier, he's really deep in the crease. He knows that if it's full, he can wait and wait and wait and still get through the ball. It's a pace-off half volley. Not the way to finish the over. Certainly not. Simon with the field up. I mean, that was a free hit for Shreyas Iyer. He's so good down the ground. Maybe this time he should be gone. Should be gone. The theory, yes, it pays off in the end. Young juggles, but what a moment. And yes, the break brings a wicket. How often do you see it? And sticking to his plan of hitting the deck from the bowler. And he gets his reward. You can see the tall man bangs it in. It's a little awkward for Shreyas Iyer. The line is good. श्रेयस अय्यर के पैड पे बॉल आई नहीं थी, वरना कोशिश तो उन्होंने की थी कि इसको भी बाउंड्री के पार ही पहुंचाया जाए. और यहाँ पर अगर श्रेयस अय्यर थोड़ा सा रुक जाते तो 10-15 रन का मैं जहाँ तक मानता हूँ कि 10 से 15 रन का या 20 रन का और फासला हो सकता था. इंडिया 250 से ऊपर जा सकता था. Height is good. He took his chances, but a little juggle. But Young making no mistake in the end. Yeah! Oh, well bowled, well bowled. Santner's always there. He picks up the wicket. The two wicket keepers in the commentary box exchanging high fives. But India lose a wicket. Keeper in second worst, getting caught behind from one. Just that one that skids on a little bit more, a little bit of grip. He's probably lucky he got a nick on that. केएल राहुल को समझ नहीं आया था कि बॉल कहां से कहां निकल गई थी. ये विकेट भी देखी थी मैंने. And otherwise it might have hit the stumps. That is a big deviation. Great catch, nice soft hands from Tom Latham. He's bowling around the wicket. There's nobody there. One bounce into the boundary for 4. Starts off a new spell with a ball that is much shorter. Right in the air. The fielder will watch it sail over. That's the shot we were referring to earlier. This time he got the length. He was able to come underneath. Have a look at his left foot. Didn't get too in line with the ball. Just gave himself enough room. Because all he wanted to do was clear long on or deep mid wicket. Luckily for him, it went over deep mid wicket and quite far as well. And remember, that's the longest side of the ground. He'll play the pull shot and he'll find the gap. He's played it fine enough. It's a fine shot, this. Because the man on the boundary was square, had to beat the 45 inside the circle, which he did. That's a terrific shot. He's flat batted it down the ground for 4. थप्पड़ शॉट कहा जाता है इसको. थप्पड़ शॉट जिस तरीके से खेला है हार्दिक ने ना, बहुत ही शानदार तरीके से खेला है ये शॉट. Oh, what a catch! Kane Williamson has come up with a beauty here. We saw one from Glenn Phillips, but Glenn Phillips will be proud of this. This is magical stuff from New Zealand. He'd taken a अच्छा,
देखने वाली बात यह है, केन विलियमसन सबके इतने चहीते हैं कि लाइक अगर केन विलियमसन कैच करते हैं या स्कोर करते हैं तो हम इंडियंस भी खुश होते हैं इस बात पे। जैसे अफगानिस्तान की बैटिंग को देख के या बॉलिंग को देख के हम लोग खुश होते हैं ना, उस तरीके से केन विलियमसन भी जिस तरीके से बैटिंग वगैरह करते हैं या जिस तरीके से फील्डिंग वगैरह करते हैं तो हम इंडियंस को भी खुश होता है। मतलब केन विलियमसन को देख के ऐसा नहीं लगता कि वो न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हैं, वो तो बस ऐसा लगता है कि लाइक इंडियन है जो इंडियन के अगेंस्ट खेल रहा है। Right-handed one-handed catch to get rid of Akshar Patel. Now this is a left-handed catch, and in a very tough position, the backward point of the jaunty corner. Gets that away finally, and into the fence. Not quite where he intended to hit it. The thickest outside edge. It's beating the man at short third. That's a lovely strike. Might have just gone the distance, this. An opportunity here to free his arms. This is up. It's long. It's 6. So suddenly some momentum here. 2 boundaries and a 6. 14 off the first 3. First 7 overs, he conceded only 16 runs. And in the 4 balls of the 8th over, he's conceded 14 runs. And 2 deliveries yet to come. All to some fabulous shots from Hardik Pandya. And what he's doing so well now, Hardik, is he's sitting and waiting. That's up. Rachin Ravindra takes it and completes the catch. And an important wicket goes down here for India. Hardik Pandya, the man dismissed. Persevered, did Henry. This one again into the surface, off pace, short. And Ravindra does well. He momentarily loses sight of this. Manages to grasp those hands around. Up in the air. And taken in the deep. 5 wickets for Matt Henry. Glenn Phillips once again making no mistake, ran a long way, and he's safe as houses when it comes to catching. यहाँ इंडिया की बल्लेबाजी खत्म होते हुए और बहुत ही शानदार तरीके से हमने देखा कि मैट हेनरी ने अपने पूरे के पूरे 5 विकेट पूरे किए। So a good performance here of under 250. Matt Henry always seems to bowl well against India. Taking a fifer in a one-day game is never easy. He's done that, and at an economy rate of 5.25. Being put into bat, making 249 for 9. So the innings held together by Shreyas Iyer 79, Akshar Patel 42. And did trouble India in the first 10 overs, taking 3 wickets for 35. Henry getting 5. Jameson, good figures till the last over. 250 needed on the spot. Wouldn't expect anything else from Shami. Will Young had a really good test tour to India. The only thing being, Shami wasn't around in that series. Gone fine for 4, and New Zealand are underway. It's very interesting you say that. Even this ball, the short of length ball, but he almost throws his hands at it. In white ball cricket, when the ball doesn't move, it helps him because he's able to get on top of the ball and create that as an opportunity to score runs. Whereas in red ball cricket, it almost will eventually get him into trouble. But for the moment, the one in trouble is Hardik Pandya. It's going down the ground, I know that. It's not beautifully timed. Oh, it might be kicked over the boundary. Can you believe that? That is an absolute bonus. Was never getting to the fence until it got a helping foot. Up and over. And out. What a catch that is. A beauty. That is a bonus for India. And it's Akshar Patel. एक स्पिनर ने कैच छोड़ा और दूसरे स्पिनर ने कैच पकड़ लिया। Safe hands diving forward. On the field,
as always, Rachin Ravindra trying to go over point but top edging it. And a lovely catch by Akshar Patel. He almost ran backwards before realizing the ball was coming in front of him. Hardik Pandya with the first breakthrough. I want to bowl there because that is just a freebie. Nice bit of timing, just that angle in. He gets hold of it. That's set up nicely and it's put away. They seem to have ample time in controlling that. It's nicely timed. Get 3. Didn't look as if he hit it too hard. The timing was so good. कोशिश की थी यहाँ पर श्रेयस अय्यर ने बचाने की अपनी तरफ से बहुत, बट उस टाइम पे किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. This line has been ये मैच देख के ना मुझे एक बहुत अंदर से खुशी आ रही है कि ना सबसे क्लीन मैच अभी तक खेला गया है. अग्रेशन विकेट लेने के बाद ना न्यूजीलैंड तो कभी भी अग्रेशन दिखाता नहीं है. इंडियंस जो अग्रेशन कभी कभार दिखा देते हैं, उनका अपनी खुशी व्यतीत करने का जो एक तरीका है वो भी इस पर दिखने को नहीं मिला. और न्यूजीलैंड कितना क्लीन क्रिकेट खेलता है. अगर उनका बैट इन्वॉल्व नहीं है तो वो डीआरएस के लिए नहीं गए, सिर्फ एक डीआरएस लिया उन्होंने. उसके बाद भी हम 3 एलबीडब्ल्यूज देख चुके हैं अभी तक. बहुत बहुत शानदार क्रिकेट और बहुत क्लीन क्रिकेट न्यूजीलैंड ने खेली है. the stumps from India. And Chakravarti, well, he's been all over New Zealand. It's pad, then the bat. The only question was, where did it hit him? Michael Goff went up straight away. And with his last ball, he gets that wicket. The last. केन विलियमसन, यहाँ थोड़ा सा दुख हुआ था मेरे को. हालांकि मैं हर इंडियन की तरह चाहता यही हूँ कि इंडिया ही जीते, बट यहाँ पर मेरे को बहुत दुख हुआ था. केन विलियमसन का भी आउट होते हुए मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हुआ था जब मैंने मैच देखा था. Ball, the very last of his 10-over spell, and look who he's gotten. Yes, this could be the final nail in the coffin for New Zealand. Kane Williamson, all hopes rested on him, beaten in the flying. Akshar Patel anticipated him coming. It was beautifully bowled. Tossed it up and pulled it back. It was, which is a lot flatter. That's a good hit. It's high and it's long. So a few more needed from the captain. That's a good strike on this occasion. And a good strike. I think with Kuldeep, because of that pace at which he's bowling, not many batsmen can slog sweep in there. That's 6 of them to end the over for Mitch Santner. The second of his innings, 184 for 7. With the swing that's going away from him. Good extension through. Oh, that would have felt nice. How's that high front elbow? We'd have taught so many batters that shot, Ravi. Beautiful swing of the bat. पिक्चर परफेक्ट शॉट खेला था सेंटनर ने. बहुत शानदार शॉट खेला ये वाला. Top shot. That's a big side of the ground. Santner is trying to take this on his shoulders and take New Zealand to the line. Long way to go still. Oh, knocks him over. Varun Chakravarti picks up a wicket. Santner goes back with a perplexed look on his face. Almost as if to say, what happened there? And I just wonder if the New Zealand captain is walking away and taking the game with him. Chakravarti. This one, the quicker one, the seam up,
Mitchell Santner missing it completely. Going under his bat. We saw him bowl one quicker one at 112, this one at 113. Varun Chakravarti has been an absolute star. Right, straight up. Should be taken. With Virat Kohli, it always is. Varun Chakravarti picks up a fifer. What a great return to the national side. Came into T20s. They backed him as a late inclusion in the side for this Champions Trophy, and he's responded with 5. Just a few years ago, in the same ground, he played against Pakistan, didn't go well, and that was the end for him in international cricket for some time. He comes back to the same ground, his Scottish Demons, and picks up his first fifer in ODI cricket. Virat Kohli, as always, safe hands. Varun Chakravarti, Kuldeep to bowl out. He's got hold of that beautifully. 200 comes up, 204 for 9. Still playing their shots. He is a fair player, old Jamieson. He's got a very good technique. And that's it. Villaroot just playing down the wrong line. Kuldeep Yadav. एंड जी हाँ, दैट्स इट. ये थी आखिरी विकेट. 205 पे न्यूजीलैंड को धराशायी कर दिया था इंडिया ने. बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स इस मैच में आए, इंडिया की तरफ से भी आए और न्यूजीलैंड की तरफ से भी आए, बट बहुत ही अच्छा लगा मेरे को ये मैच देख के, टू बी वेरी फ्रैंक. Far too clever for him, and I'm afraid that is. और लाइक अगर बात करें कि न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली. अगर मैं कहता हूं कि अगर कहीं पर विलियमसन थोड़ा सा रुक जाते, हालांकि अब कहा जाए तो हर कोई अगर रुक जाता, इंडिया की तरफ से इंडियन बैट्समैन रुक जाते, और अगर उधर से क्या कहते हैं न्यूजीलैंड बैट्समैन रुक जाते तो स्कोर ही कुछ अलग होता. इंडियन बैट्समैन रुक जाते तो शायद हो सकता है कि 300 पार भी स्कोर जा सकता था. न्यूजीलैंड अगर बैट्समैन रुक जाते तो हो सकता है कि ये मैच जीता जा सकता था. दोनों की तरफ से फेयर गेम था, बहुत अच्छा लगा. बट एक तरफ देखा जाए तो इंडिया का स्कोर चैम्पियंस ट्रॉफी में 250 पहले बल्लेबाजी करके थोड़ा सा निराशाजनक था. बट बहुत अच्छी फाइट बैक करी इंडिया ने, बहुत अच्छी फाइट करी. बहुत मज़ा आया ये मैच देख के. आप लोगों को कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा. और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा. आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं अगली वीडियो में. धन्यवाद. बाय बाय.